हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये बुक है के.पी. सिन्हा, राजीव आर सिन्हा, ये राइटर हैं। चलिए इसमें शुरू करते हैं हम लोग। क्वालिटेटिव जो टेस्ट है, 4 टॉपिक है इसमें। एनालिसिस ऑफ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, फिर एनालिसिस ऑफ पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, और यूरिन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, और चौथा है टू कैलकुलेट द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आइटम्स एंड टू आइडेंटिफाई फूड आइटम्स विथ हाई एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। Routine examination of urine is usually conducted under 3 heads: physical examination, chemical examination and microscopic examination. Physical examination में लोग वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 4 चीज़ें देखते हैं। वॉल्यूम जो है, नॉर्मली एन अडल्ट excrete between 1000 to 2500 ml urine per day depending upon the amount of fluid intake and amount lost through skin, lungs and bowel. दूसरा है कलर। कलर कैसा रहना चाहिए यूरिन का? तो नॉर्मल यूरिन जो है पेल येलो होता है इन कलर विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम. When the urine gets concentrated, it may appear deeper yellow as is seen when there is low output of urine. When bile pigments are excreted in large amount in the urine, it assumes greenish yellow color, and when blood is present, it becomes reddish. इन अल्केप्टोन्यूरिया यूरिन जो है वो बिकम डार्क ऑन स्टैंडिंग. तीसरा है अपीयरेंस. यूजुअली अ फ्रेशली वॉइडेड यूरिन जो है वो क्लियर होता है ऑन स्टैंडिंग. फॉस्फेट और यूरेट्स और ऑक्सलेट्स क्रिस्टल जो है में फॉर्म एंड इनटेक द अपीयरेंस में फॉर्म एंड मेक द अपीयरेंस टर्बिड करा देते हैं. ये जो फॉस्फेट, यूरेट्स और ऑक्सलेट क्रिस्टल बन जाते हैं ना ये. लेकिन अब नॉर्मली जो है यूरिन में अपीयर टर्बिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ WBC, RBC और बैक्टीरिया. स्पेसिफिक ग्रेविटी, 4th पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि नॉर्मल यूरिन में लाई बिटवीन 1006 to 1025 डिपेंडिंग अपॉन वेदर द यूरिन इज डाइल्यूट व्हेन लार्ज वॉल्यूम और आर पास्ड और कंसंट्रेटेड. On ingestion of large volume of water, specific gravity may go down to 1002, and in extreme case dehydration, it may go up to 1040. A specific gravity जो है वो is dependent upon the amount of solute present in urine. When abnormally large amount of glucose or protein is passed in urine, a specific gravity is high. Chemical examination के बारे में समझते हैं. Reaction. Freshly voided urine is usually acidic to litmus but may be neutral or faintly alkaline. Freshly voided urine usually acidic होते हैं litmus में but may be neutral or faintly alkaline. Urine may be investigated either for its normal constituents or for abnormal constituents. The normal constituents can be broadly divided into nitrogenous and inorganic constituents. The chief normal nitrogenous constituents are urea, uric acid, creatinine, and ammonium salt. The chlorides, sulfates, and phosphates of sodium, potassium, calcium, and magnesium are the chief inorganic constituents. Urine जो है also contains some pigments chiefly derived from blood pigments. Several enzymes are present in urine. Notable among them are amylase and trypsin. It is to be remembered that some of the normal constituents of urine are excreted in abnormal increased or decreased amount in certain abnormal condition. Chief nitrogenous constituent of normal urine. After having noted the physical characteristics, color, odor, appearance, sediments, specific gravity, and reaction of the urine, proceed to test for the nitrogenous constituents. पहला है टेस्ट फॉर यूरिया, यूरिएज टेस्ट जिसको कहते हैं.
Take 2 ml urine in one test tube and 2 ml water in another. To each test tube, add a drop of phenol red indicator and add drop by drop 2% sodium carbonate to make the reaction in each test tube alkaline, noted by appearance of pink color. Now add 2% acetic acid to both tubes drop by drop till the pink color just disappear. Reaction changes to just acidic. Now warm both tubes to about 50 degrees Celsius. When it is when it is pleasant to touch, avoid overheating, and to each add a pinch of soybean powder which contains urease enzyme. Within a few minutes, pink color appears in the tube containing urine but not the other tubes containing water. Urease. The urease enzyme decompose urea into ammonia and carbon dioxide, which together form ammonium carbonates, and an alkaline substance which changes the slightly acidic reaction yellow color to alkaline reaction pink color. Since urease is specific for urea only, positive test indicates the presence of urea. Since urease is specific for urea only, positive test indicates the presence of urea. Urea is formed in the liver out of NH3 derived from deamination of amino acid. Urea output in urine therefore is dependent upon the amount of protein ingested. Experiment 2. Urea from test for uric acid. Benedict test for uric acid and urates. 2 ml urine, add few drops of Benedict's uric acid reagent, see appendix, and a pinch of anhydrous sodium carbonate and mix. A deep blue color is produced due to reduction of phosphotungstic acid by uric acid. Uric acid is a purine derivative and is derived by oxidation of adenine and guanine of nucleic acid. It is cheaply excreted through urine. It is sparingly soluble in water in acidic medium but goes into solution in alkaline medium. Experiment 3. Test for creatinine. टेस्ट फॉर यूरिक एसिड. बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर यूरिक एसिड एंड यूरेट्स. क्या इसमें करना है? 2 ml यूरिन लेना है, फ्लूइड और बेनेडिक्ट यूरिक एसिड रिएजेंट लेना है और उसमें एक चुटकी या पिंच ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डालना है, मिक्स करना है. डीप ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फॉस्फोटंगस्टिक एसिड बाय यूरिक एसिड. Uric acid is a purine derivative and is derived by oxidation of adenine and guanine of nucleic acid. It is cheaply excreted through urine. It is sparingly soluble in water in acid medium, but goes into solution in alkaline medium. तीसरा है क्रेटिनिन. जैफीज टेस्ट.
तीसरा टेस्ट है यू टेस्ट फॉर क्रेटिनिन, जेफिस टेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2-3 ml ऑफ सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, ऐड 0.5 ml ऑफ 10% NaOH एंड डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 टेस्ट ट्यूब्स. To one test tube add equal amounts of urine and to the other same amount of water. The tube containing urine assumes a deeper reddish orange color due to the formation of creatinine picrate. The reddish orange color becomes very apparent in comparison with the control tube containing water, which shows no change. तो क्रेटिनिन में क्या करना है, जैसे टेस्ट इसका नाम है, तो 3 ml ऑफ सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन लेना है। 3 ml क्या लेना है, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, उसमें 0.5 ml 10% NaOH लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब में बांट देना है। To one test tube add equal amount of urine and to other same amount of water. The tube containing urine assumes a deeper reddish orange color. अगर deeper reddish orange color आया तो इसका मतलब उसमें क्रेटिनिन है, formation of creatinine picrate बन गया उसमें। Reddish orange color become very apparent in comparison to the control tube containing water. This shows no change. ठीक है। अब आते हैं 4th अमोनियम साल्ट के लिए कैसे करते हैं। तो 2 ml यूरिन लेना है, उसमें 1 ड्रॉप जो है फिनॉल फथैलिन और 2% सोडियम कार्बोनेट डालना है। 2 ml यूरिन ले लिए, उसमें फिनॉल फथैलिन डाल दिए 1 ड्रॉप। उसके बाद 2% सोडियम कार्बोनेट डालें ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल पिंक कलर इज ऑब्टेन। पिंक कलर आ गया, इसका मतलब अल्कलाइन है ना। बॉयल दिस फेंटली अल्कलाइन फ्लूइड एंड कीप या ग्लास ट्यूबिंग previously dipped in phenolphthalein over the mouth of test tube. बॉयल करना है, बॉयल दिस फेंटली अल्कलाइन फ्लूइड एंड कीप या ग्लास ट्यूबिंग को रखना है previously dipped in phenolphthalein over the mouth of test tube. The ammonia evolved due to decomposition of ammonium salt makes the phenolphthalein layer over the glass tubing pink. Take care not to touch the mouth of the test tube
by the glass tubing. The kidney manufacture ammonia in proportion to the amount of acid radical excreted in urine. In alkaline urine, ammonium salt is absent. In alkaline urine, ammonium salt is absent. On an average, a person excretes about 0.7 gram ammonia per day. अब आते हैं चीफ नॉन नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल यूरिन. Sodium and potassium are found in the extent of 5 gram and 3 gram respectively in terms of their oxides Na2O and K2O in 24 hours urine. सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो पाए जाते हैं फाउंड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 ग्राम, सोडियम 5 ग्राम और पोटेशियम 3 ग्राम इन टर्म ऑफ देयर ऑक्साइड Na2O के फॉर्म में और पोटेशियम K2O के फॉर्म में इन 24 आवर यूरिन, 24 घंटे के यूरिन में. दूसरा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज लो, 0.1 to 0.2 ग्राम पर डे. इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन इंक्रीजेज ड्यूरिंग डिस्टर्ब्ड बोन मेटाबॉलिज्म सच एज hyperparathyroidism. Magnesium is also excreted in a small quantity, 0.05 to 0.2 gram per day. Iron is found in urine but very small quantity. Iron is found in urine in very small quantity. Chlorides form the chief anion of the urine. Chlorides form the chief anion of the urine. The amount excreted in urine depends upon food and on quantity of its loss through sweat. Chlorides form the chief anion of the urine. The amount excreted in urine depends on the food and the quantity of its loss through sweat. About 10 to 12 gram of chloride NaCl is excreted daily. Sulfates of urine come mainly from the oxidation of sulfur containing substance. Example, protein. Sulfates in urine come mainly from the oxidation of sulfur containing substance. Example, protein. It is present in urine in three forms: neutral sulfur, unoxidized such as cysteine, methionine, etc. दूसरा oxidized sulfur and sulfates of sodium, potassium. और तीसरा ethereal sulfates. Some compounds are detoxified by conjugation with sulfur group, which are known as ethereal sulfates. Indoles, indoxyl sulfates, ascatoxyl sulfate, etc. A small amount of sulfur is excreted in this form. फिर आता है phosphate. Phosphates क्या exist in urine as salt of sodium, potassium, ammonium, calcium and magnesium. In alkaline urine, phosphates crystals out in characteristic shapes. Test for chlorides. Acidify 2 ml of urine with 2 drops of conc-HNO3 and add to it 2 ml of silver nitrate solution. A white precipitate of sodium chloride is formed. Acidify 2 ml of urine with 2 drops of conc-HNO3 and add to it 2 ml of silver nitrate solution. Yes, white precipitate of silver chloride is formed. Test for phosphates. To a test tube, 3/4 full of urine, add a little ammonium hydroxide and boil
A white flaky precipitate of phosphate of calcium and magnesium is formed. Filter of this precipitate through a small filter paper. Wash the residue to the on the filter paper with water and dissolve it in about 3 ml of hot dilute acetic acid. By pouring hot acid on the filter paper while still in the funnel, collect the solution in a clean test tube and divide it into 2 parts. Retain 1 part for the next experiment. To the other parts, add a drop of concoction of clay and a few drops of ammonium molybdate solution and boil. Observe the lemon yellow precipitate. Take the calcium. Test for calcium. To 1 part of the solution retained in experiment 6, add about 1 ml of potassium oxalate solution. A white precipitate of calcium oxalate is immediately seen. Test for sulfates. To about 3 ml of urine, add a few drops of corn HCl and 1 ml of barium chloride solution. A white precipitate of barium sulfate is produced. Presence of HCl prevents precipitation of phosphates. Test for sulfates. To about 3 ml of urine, add a few drops of conc HCl and 1 ml of barium chloride solution. A white precipitate of barium sulfate is produced. Of HCl prevents precipitation of phosphates.